Toshika, good afternoon. DNT, good afternoon. Anchal, Samruti, good afternoon. God bless you, beta. Veena, good afternoon. Toshika, good afternoon. Neha, good afternoon. Thank you for your flowers. Ravneet, good afternoon. Dolly, good afternoon and thank you for your flowers. Alka, good afternoon. Anita, good afternoon. Thank you for your flowers. Nitesh, good afternoon. Isha, good afternoon. God bless you. Ria, good afternoon. Thank you for your flowers. Good afternoon. Thank you for your flowers. Samvedna, good afternoon and thank you for your flowers. Jyotika, good afternoon. Helicopter, good afternoon. Anchal, good afternoon. Okay, today is your first day. Keep on attending all the live. Amit, good afternoon. Thank you for your flowers. Acha, okay, DND. Okay, Ranjan, you joined after 2 weeks. Acha, that's wonderful. God bless you. Right, Vivek, I understand. I don't know, Priya, अभी तो बहुत टाइम लगेगा. 2 साल लगेंगे, don't worry. Ajay, good afternoon. God bless you. Pooja, good afternoon. Anchika, good afternoon. Amit, good afternoon. God bless you. Thank you for your flowers. Okay, yeah, Sahina, I saw your name for the first time. Welcome to the batch. Gauri, good afternoon. Reena, good afternoon. Thank you. Tarun, good afternoon. Gaurav, good afternoon. God bless you, beta. God bless you always and thank you for your flowers. Sahina, you're welcome. ठीक है. Okay, the end. Right. Good afternoon, Tashu. God bless you. Saloni, good afternoon. Thank you for your flowers. Jigata, good afternoon. Wow, sweet Priyanka. Thank you. Where have you joined? Where are you from, beta? Devendra, good afternoon. Yasmina, good afternoon. God bless you, beta. Good afternoon, Simran. Thank you for your flowers. ऑनलाइन के साथ साथ जो भी सब्जेक्ट्स हो गए उतना ही करो बस. रोहन, गुड आफ्टरनून. यहाँ गुलाम वर्सेस आर लाहौर का है. यस. हरजिंदर, गुड आफ्टरनून. हरलीन, गुड आफ्टरनून. थैंक यू फॉर योर फ्लावर्स. ओके प्रियंका. Simranpreet, good afternoon. Thank you for your flowers. Yes, Shivdeep. We can. It's not an opinion actually. It's not opinion. They will basically, neighbors will give facts that these two persons were living together for a very long time. So that is why the presumption now can be taken under 114. I've discussed this. ये मैंने पूरा आधा lecture इस पे बिताया हुआ. Twinkle, good afternoon. Thank you for your flowers. Yes, Arlene, thank you. Yes, I know, Rohan. Yes, Ranjan. It is always the place where the offense happens and not the nationality. I specifically said this when I was teaching you jurisdiction in IPC. Good afternoon, Gaurav. God bless you. Thank you for your flowers. Okay. Let me close the door. I think there's too much of noise. Okay. Don't worry, Sahina. No problems. You keep on attending the live classes and start attending the classes right from July, 21st of July. Keep on covering 3, 3, 4, 4 lectures and also keep on attending the live. Then you can slowly get into the
groove. True, Rohan. Syllabus varies from state to state. Good afternoon, Meenakshi. Okay, Ranjan. Yes, Tarun. If you are noticing, all the persons, all of them are my students, and they just followed what I told them in class. And that is how I have been able to help 400 students become judges. You can always answer, go to the Punjab ka notification, the entire syllabus is there. Let's not waste time on this. You can easily get it. Kanchan, good afternoon. I know, I saw that, Simran. Don't worry. Don't worry. Kushwan, good afternoon. God bless you, beta. Okay. Now, in my previous lecture, we were on... Harleen, let's not bother about the drafts. See, they may draft IPC and CRPC, but the draft will be thrashed for a very long time in the parliament. So I don't expect IPC or CRPC to come in, new IPC, CRPC to come into action for another 1-2 years, 2 years minimum. Even if it comes, don't worry. I'm there to dissect that again. And again, basics will remain the same. There will be few changes here and there. So don't worry about it. You will, mostly 90% will be the same. 10% changes are going to be there. Okay. Right. Good afternoon, Anushka. Challenge तो क्या होगी, पर यह है कि don't worry, let it come. When it comes, it will take, I need just 1 week, और पूरा का पूरा मैं आपको नए सिरे से करा दूँ. Yes. Let's see, Shivdeep. We are not legislatures, so let them decide. Paneer, good afternoon. Right, Yasmin, I'm happy. Detail में तभी मैं कहता हूँ पढ़ते जाओ, और अब you will do it. हाँ, सिमरन जी, I saw 11 judges were there. चलिए. No, Mitansh, it's not insufficiency of law. It is basically adjournments and a huge backlog of cases. Let's see, Ranjan. Chaliye, let's start our today's lecture and continue with the last topic. I know that, Sonu. चलिए शुरू करें. Last time we had discussed, we were on the topic of relevancy. We first discussed section 5, which was a very, very important section on relevancy. In relevancy, we saw that it is basically legal relevancy which we are talking about and not logical relevancy. We saw the relationship of legal and logical relevancy with admissibility. I framed the questions also on these. And we saw the explanation where we saw that if any aspect of evidence is allowed by CPC and it is not allowed by Indian Evidence Act, then it's an exception to the rule that local and special laws override general laws. These are rare exceptions. And here we very clearly saw that CPC will overrule Evidence Act. We spent a whole lecture on this. I hope everybody's clear. It's just a recap. All the new students who are joining, please make it a point to start from lecture number 1. For example, if you are going for evidence, start from evidence 1, 2, 3, 4, 5 onwards and try to cover 3, 3, 4, 4 lectures. You'll have to burn the extra midnight oil, but then there is no shortcut to success. The details you will get there. Probably almost all your questions will be answered. And also you will be in the groove to understand the questions and the lectures
which are now I am taking live. Okay. Now last time we had seen that the best relevancy is that of the transaction itself. जो transaction में हुआ वो naturally सबसे important चीज है, because everything is based on the transaction in which the fact and issue happened. इसीलिए हमने पिछली बार डिस्कस किया जो पहला रेलेवेंसी का सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज से डील करता है, द ट्रांजैक्शन जिसमें वो फैक्ट इन इशू आया. Now we saw the meaning of the word transaction. Basically it is a connection of facts connected by time, place and other things. That a transaction, because naturally it is everything flows out of the transaction. The transaction is the so-called fountainhead of the entire matter. That is the reason why anything connected with the evidences connected with the transaction will carry the highest evidentiary value. The highest evidentiary value naturally goes to the transaction. The next evidentiary value will go to those matters which are connected with the transaction. In other words, which are relevant. जो उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, जिस उस ट्रांजैक्शन के लिए इन्फ्रेंसेस देते हैं. That is why section 6 is a very important section. Because if I was asked which section has the highest probative value, without any second thought I will say section 6. ऐसे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछते हैं कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो जिसके अंदर प्रोबेटिव वैल्यू बड़ी हाई है, जो सब्सटैंटिव एविडेंसेस मान सकते हैं, जिनके ऊपर सीधा जजमेंट्स दिए जा सकते हैं. सेक्शन 6 डाइंग डिक्लेरेशंस, कन्फेशंस एंड एडमिशंस. इस तरह के आजकल एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं. नेचुरली क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, we must know the length breadth history of these sections. और इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं. We started discussing one aspect of transaction in my last lecture, which was res gesti. We saw the meaning of the word. The res gesti word is nowhere written in section 6. कहीं भी ये नाम नहीं. However, it means a thing done in a transaction. A transaction. It's a Latin word. Common law से ये principle आता है. इसके ऊपर मैंने आपको पूरा एक detailed analysis दिया res gesti का. In the words of Supreme Court, जी विजयवर्धन राव वाला केस जो था 1996 सुप्रीम कोर्ट, पिछली बार मैंने आपको डिक्टेट करा. एंड दैट इज व्हाई रेस जस्टी के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी. फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ रेस जस्टी टू बिकम अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वुड बी स्पॉन्टेनिटी, कंटेम्परेनिटी एंड इमीडिएसी. पिछली बार हमने डिटेल में देखा. इनका मतलब क्या होता है वो भी हमने देखा. अगर थोड़ा सा भी टाइम गैप हो जाए जिसमें एविडेंस को फैब्रिकेट करने का मौका मिल जाए तो फिर वो रेस जस्टी नहीं होगा. हमने इस पूरे लॉ का डेवलपमेंट देखा. पहले हमने देखा आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, जिसके अंदर इवन अगर वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी, 1879 की बात है, तो जज ने कहा ये रेस जस्टी नहीं है. शी हैड टाइम टू थिंक. पर हमने फिर बाद में देखा थोड़ा डाइल्यूशन. हमने इंग्लिश लॉ में देखा राटन वर्सेस आर, जिसके अंदर थोड़ा डाइल्यूशन.
और जब हम इंडियन लॉ में आए तो हमने देखा कि टाइम गैप थोड़ा बहुत हो सकता है, और वो हमने देखा खासकर रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और बाकी और मैंने जजमेंट्स आपको दिए। एक चीज हमने पिछली बार और देखी कि जो भी ट्रांजैक्शन का पार्ट बनता है वो सब रजिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, और सबका एविडेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है, इवन दो वो मेन मुद्दे से जुड़े हुए नहीं थे। जहां बी ए को मर्डर करने आया वहां पे XYZ उससे उनकी दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था, पर क्योंकि वो मौके पे थे सो दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसलिए उनका साक्ष्य, उनका एविडेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सब्सटैंटिव है, जितना कि कोई और मामला हो। यानी कि रजिस्ट्री में वो लोग भी जुड़ जाते हैं जो मेन फैक्ट इन इश्यू से जुड़े हुए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बायस्टैंडर्स जो मौके पे खड़े हैं। वो पिछली बार मैंने आपको पूरा एक एग्जाम्पल देके पूरा चीज समझाई थी, आई होप समझ आ गया होगा सबको। वी देन वेंट ऑन टू डिस्कस दैट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, रेस्ट जस्टिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ हियर से डिस्कस। इसके ऊपर मैंने आपको पूरा डिस्कस किया आर वर्सेस फॉस्टर का केस, जिसके अंदर हमने देखा कि इवन दो उसने एक्सीडेंट होते नहीं देखा था, बट देयर वर नो चांसेस ऑफ कंकॉक्शन और फैब्रिकेशन। कोर्ट ने उसको माना कि ये रेस्ट जस्टी है, और यही चीज हम देखते हैं इंडियन लॉ में रतन सिंह वगैरह के केसेस में, या जो भी मैंने आपको जजमेंट दिए थे उसमें हमने देखा कि चाहे इमीडिएटली आपने देखा ना भी हो, बट फैब्रिकेशन का, कंकॉक्शन का देयर वाज नो चांस, तो वो रेस्ट जस्टी का पार्ट बनेगा। आई थिंक हमने यहां तक पिछली बार डिस्कस किया था। वी हैड कवर्ड ग्राउंड टिल हियर। ओके, let's continue. I had given a general discussion on res gestae. अब हम चलते हैं सेक्शन 6 के बेयर एक्ट पे, बेयर वर्ड पे चलते हैं। सेक्शन 6, facts which though not in issue, facts which though not in issue, वो स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में बैठे थे जिनका A वर्सेस B की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था। Facts which though not in issue are so connected with the fact in issue, पर वो उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन गए, as to form a part of the same transaction. So same transaction का हिस्सा बन गए, चाहे वो इशू से जुड़े हुए नहीं थे, पर वो इशू में इसलिए जुड़ गए क्योंकि वो ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन गए थे। आर रेलेवेंट, वो फिर एडमिसिबल है। Whether they occurred at the same time and place or at different times and places. अब ये जो सेकेंड पार्ट है, now basically please remember section 6 envisages two types of transactions. एक जिसको मैं कहूंगा पर्सनल और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, और दूसरा जिसको मैं कहूंगा जनरल ट्रांजैक्शंस. So one thing we must be clear. Suppose now the question which can be framed, discuss the transactions as envisaged in section 6. अब इसके अंदर याद रखना है कि हमारा जो रेजिस्ट्री है वो कहां लगेगा? जब आप मौके पे प्रेजेंट हो तो नेचुरली पर्सनल वालों में लगेगा। जनरल ट्रांजैक्शन क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं। ए पाकिस्तान में ISI का चीफ है, वो बी जो दिल्ली में बैठा है उसको उसके साथ कॉन्स्पिरेसी करता है
कि तुम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता यहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करो। उसके लिए वो इसको पैसे भेजता है, बी, सी और डी को रिक्रूट करता है, जो यहां पे अलग अलग जगह बॉम्ब्स दिल्ली में सुबह करते हैं, मुंबई में शाम को करते हैं, कलकत्ता में अगले दिन करते हैं, चेन्नई में उससे अगले दिन करते हैं, बट दे आर एक्चुअली वन प्रोलॉन्ग्ड ट्रांजैक्शन। सो अगर हम एक कॉन्स्पिरेसी का लॉ देखें तो जरूरी नहीं है कि उसी दिन सब कुछ करना है। कॉन्स्पिरेसी में बी स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो भी एक ट्रांजैक्शन में आता है। So even a transaction which is spread over a period of time would be covered by a transaction. This transaction which is spread over a long period of time would be called a general transaction. Is everybody clear on this, please? Okay. Now, so now the question arises. The question, please write down the question. Facts which form a part of the same transaction, even though not connected with fact in issue, are admissible. Critically examine. Second question. Transaction has a great evidentiary value in Indian Evidence Act. Discuss this in light of facts which form a part of the same transaction in Indian Evidence Act. Third question. Res gesti is an exception to the rule of hearsay. Critically examine. Fourth question. Res gesti can form the basis of conviction if found to be trustworthy. Critically examine. Next question. Contemporaneity and spontaneity is the very basis of res gesti. Discuss the concept of res gesti with the help of case laws to elucidate this statement. And finally, write short notes A on res gesti, B transaction in Indian Evidence Act. Now that we are clear on all these aspects, let's go back to the Bare Act. Facts which, though not an issue, are so connected with the fact in issue to form a part of the same transaction are relevant, whether it is one transaction, single individual transaction, or whether they occurred at the same time and place, individual personal transaction, or different times and places. इसको आगे लिख लो, general transaction. Let's go to the examples given in the illustrations. Harleen, whenever we write critically examine, इसका मतलब होता है इसके pros and cons दोनों देने. Critically का मतलब होता है analytically उसको पूरा decide करना है कि res gesti, for example, is an exception to hearsay. ये critical examination है.
या जहां पे दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूज मिलते हैं फिर वहां दोनों लिखने हैं। ये सब मामले क्रिटिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। सो बेसिकली व्हेनेवर वी राइट क्रिटिकली एग्जामिन, इट इज नॉट अ मियर discussion which is based on simple facts. It is an analytical discussion with depth, especially with case laws, of course. Okay. Now let's go to the illustrations. Illustration B. Priya. Illustration B में क्या है? Okay. I'll quickly go back, Priya. I think I missed this. A suitor who does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies. एक सूट जिसने प्लेंटिफ जो है वो एक पैसा आपने मांगा था, आपने प्रो नोट लिखा था, आपका पैसा नहीं दिया डिफेंडेंट ने, आपने उसके खिलाफ सूट डाल दिया। आप जब आपके पेशी आई, आपके पास वो नोट जिसमें डिफेंडेंट ने लिखा था आई ओ यू दिस मनी, वो आपके पास तैयार नहीं था। This section does not enable him to prove the bond, to produce the bond, or prove its content at a subsequent stage of the proceedings, otherwise than in accordance with the conditions prescribed by CPC. अगर आप शुरुआत में बॉन्ड पेश ही नहीं कर पा रहे जिस चीज पे आपका पूरा सूट टिका हुआ है, तो फिर हम आपको बाद में अलाउ नहीं करेंगे अनलेस की सीपीसी अलाउ करता हो। आई होप प्रिया यू आर क्लियर ऑन दिस। Okay. I hope everybody is clear on this. Yeah, सुष्मिता is clear. मैं दोबारा बोल रहा हूँ। See, A B को मारने आया। प्लीज ध्यान देना। A B को मारने आया, ठीक है? उसने वो जब से गाड़ी से उतरा और इसको गोली मार के जब तक वापस नहीं भाग गया, ये क्या है? एक सिंगल ट्रांजैक्शन, ठीक है? ए बी को मारने आया, अभी गाड़ी से रुका, उतरा, भागा, उसको मारा, वापस भागा, गाड़ी में बैठा, रास्ते में 10 लोगों को भी मारा। ये सारा क्या है? जैसे ही ए गाड़ी में बैठ के भाग गया तो क्या हो गया? सिंगल ट्रांजैक्शन। ये किससे कनेक्टेड है? टाइम, सेम टाइम, ठीक है? सेम प्लेस, राइट? अब ले लो दूसरा जनरल ट्रांजैक्शन। ए ने बी, सी और डी को एम्प्लॉय किया कि तुम बॉम्ब ब्लास्ट करो। बी को कहता है तू दिल्ली में कर, सी को कहता है तू मुंबई में कर, और डी को कहता है तू चेन्नई में कर। तुम मंडे को करोगे, तुम ट्यूसडे को करोगे और तुम वेडनेसडे को करोगे। इस केस में क्या है? इसमें दे आर नॉट कनेक्टेड बाय टाइम एंड प्लेस, बट दे आर कनेक्टेड बाय समथिंग एल्स। देयर इज द सेम। इनको क्या चीज जोड़ रही है? व्हाट इज इनको क्या चीज कवर कर रही है? सेम इंटेंशन नहीं कहेंगे इसको, कम्युनिटी ऑफ पर्पस। कम्युनिटी ऑफ पर्पस, एक ही मकसद है। क्लियर हो गया? सो कम्युनिटी ऑफ पर्पस और कम्युनिटी ऑफ डिजाइन जिसको हम कह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। सो एक चीज याद रखना, जब भी हम सिंगल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो क्या चीज जुड़ी होंगी, क्या चीज कॉमन होंगी? टाइम, प्लेस। हो सकता है जो आपका इंटेंशन है वो भी वही हो, बट जब मैं जनरल ट्रांजैक्शन की बात करता हूं, टाइम और प्लेस डिफरेंट हो सकते हैं, बट हमारा ऑब्जेक्ट एक ही है, हमारा कम्युनिटी ऑफ डिजाइन एक ही है, हमारा कम्युनिटी ऑफ पर्पस एक ही है। समझ गए सारे? इज एवरीबॉडी क्लियर? किसी को कोई शक? नहीं कुणाल, मोडस ऑपरेंडी अलग चीज होती है। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है काम करने का तरीका।
काम करने का तरीका हो सकता है मैं बॉम्ब रखूं मुंबई में, दिल्ली में मैं कुछ और तरह की चीज रख दूं, चेन्नई में मैं और तरह का कुछ बॉम्ब ना रखे कुछ और रख दूं। ओके फाइन, चलिए अब इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं। लेट्स टेक द इलस्ट्रेशंस और अब हम देखते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन और जनरल ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्लियर किए गए हैं ए और बी में। चलिए हम देखते हैं पहले ए। A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or by the bystanders at the beating or so shortly before or after it to form a part of the same transaction is relevant and admissible. तो A B को मारने आया, ए बी को मारते वक्त जो हो रहा था और ए जब आ रहा था और ए जब भाग रहा था, ये सारा एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा, एक सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर हो गया सबको? अब देखते हैं जनरल ट्रांजैक्शन का। अब एक चीज नोट करो, अभी तक हम जब व्हेन वी वर रीडिंग द बेयर एक्ट के जो सेक्शन, उसमें कहीं भी जनरल ट्रांजैक्शन वर्ड यूज नहीं था, बट इंप्लाइड था, डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। इलस्ट्रेशन बी स्पेसिफिकली यूजेस द वर्ड जनरल ट्रांजैक्शन। एक चीज याद रखना, बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, इलस्ट्रेशंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेक्शन। इलस्ट्रेशन जो होता है वो सेक्शन का ही हिस्सा माना जाता है एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सो इसीलिए जो कुछ भी हम इलस्ट्रेशन में देख रहे हैं वो हमारा सेक्शन का ही पार्ट है। चलिए इस बैकग्राउंड के साथ लेट अस गो टू इलस्ट्रेशन बी। A is accused of waging war against the government of India. A is accused of waging a war against India by taking part in an armed insurrection. Armed insurrection का मतलब है armed revolt, in which property is destroyed, troops are attacked, अलग अलग चीजें हो रही हैं, पर क्या चीज सेम है? सेम कम्युनिटी ऑफ पर्पस, जिसमें अलग अलग चीजें कर रहे हैं। हम वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया कर रहे हैं, उसमें हम बॉम्ब भी चला रहे हैं ट्रूप्स के ऊपर, या प्रॉपर्टी को सरकार की डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड जेल्स आर ब्रोकन ओपन, जेल तोड़ के हमने लोगों को बाहर निकाल दिया। अलग अलग चीजें, बट सारा एक ट्रांजैक्शन है। प्लीज सी, the occurrence of these facts is relevant as forming a part of the general transaction. वर्ड क्या आ गया? जनरल ट्रांजैक्शन। अब इनमें आप चीज नोट करो, अलग अलग एक्ट हैं, अलग अलग जगहें हो सकती है, अलग अलग टाइम हो सकती है, बट पर्पस क्या था? वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया and forming part and jails are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not be present in all of them. जरूरी नहीं है, वही जो मैंने आपको आईपीसी में व्हील कॉन्स्पिरेसी कराया था, वही चीज यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। We are seeing the concept of wheel conspiracy being reflected here. Okay. I hope everybody is now clear on both the general transactions as well as the specific or individual transactions. Okay. And naturally, public property, वो तो see property का एंगल नहीं है, एंगल ये है कि हम कर क्या क्या चीजें रहे हैं, अपनी चीज को फॉलो करते हुए, अपनी कॉन्स्पिरेसी को फॉलो करते हुए क्या क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो इफ आई वाज टू डिस्कस अबाउट जनरल ट्रांजैक्शन, या कोई भी अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं,
whenever transactions consist of different acts, then to constitute such a transaction, they must be connected by time or place or continuity of action or community of purpose. सबने लिख लिया इसके बारे में? ये चीज मैंने कहां से ली है? एक बहुत पुराने जजमेंट से. प्लीज राइट डाउन. और कम्युनिटी ऑफ पर्पस. सबने लिख लिया इसके बारे में? ये चीज मैंने कहां से ली है? एक बहुत पुराने जजमेंट से. प्लीज राइट डाउन. ये अता मोहम्मद खान वर्सेस एम्परर. इसका मेरे पास ईयर मैंने लिखना भूल जाऊं. सिमिलरली एक और है अमृता लाल वर्सेस एम्परर. We have Handu versus State. This is 1951 उड़ीसा हाई कोर्ट. तो ये कोट कर सकते हो. अगर जनरल ट्रांजैक्शन पे आपको क्वेश्चन आ जाए तो ये जजमेंट्स आप कोट कर सकते हो. दैट एक ट्रांजैक्शन कब मानी हो जाएगी? जब वो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम हो या प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस हो या कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन हो और या कम्युनिटी ऑफ पर्पस हो. तब एज पर द प्रीवी काउंसिल जजमेंट्स इनको हम ट्रांजैक्शन मान सकते हैं. ओके. नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लिख लेते हैं. वन क्वेश्चन इज कम. Can FIR become a part of registry? ये क्वेश्चन ADG में आया हुआ है. पर कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको भी ये क्वेश्चन आ जाए. Where a murder happened near a police station and the witness who was present at the scene and was part of the transaction rushed to the police station and lodged an FIR. The making of the FIR can be taken as a part of the same transaction. And in this case, the FIR may also be taken a part of the registry. Ordinarily speaking, an FIR only has a corroborative value. Ordinarily, an FIR is never res geste. But there are chances where, if there is proximity of time and place, and a witness who was part of the transaction immediately rushes to the police station and lodges an FIR, then they may be taken to be a part of registry. Such an FIR would have a very high probative value. Now, one thing is there, जो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी क्या FIR सेले शॉट वाली, क्या FIR रजिस्ट्री बन सकती है? यदि एक ट्रांजैक्शन थाने के आसपास हुई हो और विटनेस जो ट्रांजैक्शन का पार्ट था वो तुरंत पुलिस स्टेशन भागा जाए और FIR दर्ज करा दे,
तो फिर हम मान सकते हैं कि उसकी जो ये पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन माना जा सकता है। इसके अंदर नॉर्मली हम मानते हैं कि एफआईआर एक कॉरोबोरेटिव वैल्यू रखता है, बट जहां पे एफआईआर तुरंत प्रभाव से ट्रांजैक्शन होते ही दर्ज हो जाए और वो भी वो व्यक्ति करे जो ट्रांजैक्शन का हिस्सा था, तो हम कुछ स्थितियों में इनको देख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन का ही कंटिन्यूड पार्ट माना जा सकता है। ओके, अब एक क्वेश्चन जो बहुत बार आया हुआ एग्जाम्पल में, yes, it is not substantive evidence, but here FIR may become substantive evidence if it is taken as a part of res gesti, which would be a very very rare phenomenon. यानी कि थाने के बाहर कोई मर्डर हो गया और जो वहां पे था वो सीधा अंदर आ गया थाने में, उसने FIR दर्ज कर दी, तो मान सकते हैं कि ये इसमें टाइम गैप नहीं था और कंकॉक्शन का टाइम नहीं था, तो हम मान सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन जो बहुत बार आया हुआ है वो है बाय स्टैंडर्ड्स पे। बाय स्टैंडर्ड्स जो वर्ड लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन ए में, इलस्ट्रेशन ए में हम देखें कि बाय स्टैंडर्ड वर्ड यूज हुआ है। इस पे शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। बाय स्टैंडर्ड्स, बाय स्टैंडर्ड कौन होते हैं? बाय स्टैंडर्ड वो होते हैं जो जब मौका चल रहा है उस पे उस टाइम प्रेजेंट हैं। सो जो लोग उस टाइम पे इंसिडेंट का पार्ट हैं, जो लोग बाद में शोर सुन के आते हैं, those people who come even though at a very short time gap के बाद आते हैं, वो बाय स्टैंडर्ड नहीं माने जा सकते। सो बाय स्टैंडर्ड वो होते हैं जो जब इंसिडेंट चल रहा है दे बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। ऑल दोज हु कम लेटर, आवाज सुन के शोर सुन के आ गए, चाहे एकदम आ गए पर इंसिडेंट खत्म हो चुका था, उनको हम बाय स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। ये मामला क्लियर किया था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, बी नागाराजू वर्सेस आंध्र प्रदेश, 1984, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। ओके, I hope now everybody is clear on all these matters. Now we go to illustration C and D. Until bystanders may be chance witnesses. It is not necessary that they are all chance witnesses. Yeah. Okay. Now when I go to illustration C, let's go to C. A sues B for a libel. Libel means defamation in writing. A sues B for a libel contained in a letter forming a part of correspondence. A B को defamation उसने लिख के कुछ भेजा, जिसके अंदर उसने एक चिट्ठी लिख के उसको एक ओपन पोस्ट कार्ड भेज दिया जिसमें उसको बहुत डिफेम किया। Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming the part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself. ट्रांजैक्शन का शुरुआत कहां से होती है, इसको इलस्ट्रेशन सी शो करता है सिविल लॉ में। इसके अंदर सपोज A was in love with B and they wanted to marry. B जो लड़की थी उसने चिट्ठियां लिखनी शुरू की A को कि मुझे तुम्हारी नियत पे शक हो रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर पे शक हो रहा है, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि तुम बड़े वैगाबॉन्ड हो, मुझे पता चला कि तुम्हारी इस लड़की के साथ भी चक्कर था, उसके साथ ये सारी बातें लिखनी शुरू की। करते करते उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, लड़ाई हो गई और एंड में जाके लड़की ने एक ओपन चिट्ठी लिख दी
या एक ओपन पेपर में छाप दिया, या एक वो क्या कहते हैं, एक वो हैंड आउट छपवा दिया और मोहल्ले में बंटवा दिया, इस लड़के से बच के रहना, कोई शादी ना करे। अब शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत कहां से हुई थी? लड़की ने उसको कहा, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है कि तुम्हारा अफेयर था, क्या ये सच है? उससे बात बढ़ते 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 एंड में पैम्पलेट तक पहुंच गई, जहां उसने सारे मोहल्ले में पैम्पलेट बंटवा दी। ओके फाइन। तो इसका मतलब है एक ट्रांजैक्शन शुरू कब हुआ? ट्रांजैक्शन शुरू कब हुआ? जब उसने पैम्पलेट छपवाए, कि जब उसने पहली चिट्ठी लिखी कि मुझे इसके बारे में बताओ, क्यों ये मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं तुम्हारे इनसे चक्कर रहे हैं, सच्चाई बताओ। क्या यहां से शुरुआत नहीं हुई ट्रांजैक्शन? एग्जैक्टली। सो ये ट्रांजैक्शन कहां से शुरू होता है? पहली लेटर से, और जो लास्ट में पैम्पलेट छपते हैं वो पूरा एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्लियर? Now we go to illustration D. Illustration D. The question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. Let's take an example. A ने B को ऑर्डर दिया कि मुझे ऑनलाइन एक 50,000 का कारपेट भेज दो। बी ने कहा इतना महंगा कारपेट है, बनाना पड़ेगा, अब मुझे 50,000 रुपए पहले पेटीएम करो। ए ने पेटीएम कर दिया, कारपेट आया नहीं। अब बाद में बी प्रूव करने की कोशिश करता है कि जनवरी में मैंने ये कारपेट भेजा, पहले सी को गया, मैंने कारपेट बनवाया, मैंने यूपी में कानपुर में बनवाया। सी जो है वो मेरठ में रहता है, मेरठ में पहुंचा। सी ने फिर डी को भेजा जो दिल्ली में रहता है। डी ने फिर आगे ट्रांसपोर्ट किया, पानीपत तक पहुंचा ई के पास। ई ने भेजा अंबाला एफ के पास, यहां कहीं गुम हो गया। तो ये सारी एक ट्रांजैक्शन है टू प्रूव करने के लिए कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो भेज दिया है, सी को पूछ लो, डी को पूछ लो, ई को पूछ लो, एफ को पूछ लो, सबके पास कारपेट पहुंचा था। गॉट इट? गॉट इट? यस यस ट्रू। जनरल ट्रांजैक्शन का एक पूरा ट्रांजैक्शन शुरू कब होता है? Jigata, I'll quickly speak in English. You know, in this D illustration, I try to explain it through with an example. Suppose A has placed an order with B for a carpet costing 50,000 rupees. B says, sir, it is a very expensive carpet and I'll have to make it on your order. Please pay the money in advance. A pays B through Paytm 50,000 rupees. The carpet is never delivered. A puts up a suit against B. B now proves that he had in January sent it first to C at Meerut, who had then sent it to D till Delhi. After Delhi, it was sent to Panipat to E, and E had sent it to F in Ambala. Now it was to be delivered to Chandigarh. The fact that I did make the carpet and in time, because I had given the contract that I will send the carpet in January. I did it. Now the evidence of C, D, E and F becomes relevant to prove that B is not telling lies. Yes, Priya. Right. Is everybody now clear? सबको clear हो गया? Okay. So I guess we have discussed almost all the aspects of section 6. Res geste,
single transaction and general transactions. Fine. We now go on to section 7. Now, if section 6 was the transaction, now sections 7, 8, 9, etc. are what follow up a transaction. What precede a transaction and what follow up a transaction. We started, please remember, section 6 to 11 deal with general matters of relevancy. From section 12, specific matters of relevancy will start. 6 to 11 deal with general matters of relevancy. The first most important section was 6, where we dealt with the law of transaction. Now naturally what 7 now is a follow-up. Let's see what 7, what all does it deal with. चलिए चलते हैं section 7 में. Facts which are the occasion. Point number 1. Which are the occasion. Point number 2. Cause or effect. Point number 3. Which afforded an opportunity. So please remember, 5 instances of connections are being given here. Firstly, if they are an occasion. Secondly, if they are the cause. Thirdly, if they are the effect. Fourthly, if they afford an opportunity. And fifthly, if they constitute a state of things. 5 चीजों को relevant कर रहा है section 7. All these are not a part of the transaction. All these either precede the transaction or follow the transaction. Section 6 dealt with those matters which are admissible as part of the same transaction. Section 7 makes relevant and admissible a very large class of facts which are connected with the fact in issue, though they are not forming a part of the same transaction. Same transaction नहीं है, but same transaction से बहुत closely जुड़े हुए हैं. When I talk about the word occasion, occasion का मतलब क्या होता है? उसका बैकग्राउंड क्या था? एक मैरिज हो रही है, गांव में मैरिज हो रही है. एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई बिजनेसमैन है, उसकी बेटी की मैरिज हो रही है. डाकू आ गए. ओकेजन क्या था? उनको पता था सब लोग अपना सोना पहन के आए होंगे. बिजनेसमैन ने भी बहुत सारा सोना बनाया होगा, अमीर आदमी है. It becomes a occasion. We have illustration A on occasion. Let's see the illustration A. The question is whether A robbed B. The fact that shortly before the robbery, B went to fair with money in his possession, and that he showed or mentioned it to third persons are relevant. There was a boy whose father gave him. He did not pass as a judge. He was crying at home. His father was a very soft-hearted man. He said, "बेटा रो क्यों रहा है?" He said, "मैं जज नहीं बना." He said, "तो क्या हो गया? पकड़, तू मेरे से अभी 10 लाख रुपए ले और साथ जाके कर जा."
तो वो 10 लाख रुपए लेके 2-2 हजार की गड्डियां लेके वैसे हवा करता करता जाता है मॉल में। जो उसकी फ्रेंड्स हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के, उनको दिखाता है यार बड़ी गर्मी लग रही है, और तभी सारे पिक पॉकेट उसके पीछे हो जाते हैं और उसके जेब से उसके हाथ से छीन लेते। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इलस्ट्रेशन ए सेज। तभी तो नहीं पता। ओके, क्लियर हो गया? एवरीबडी क्लियर? सो व्हाट इज एन ओकेजन? Occasion basically is what was the absolute background, what things prompted the transaction. Okay, I hope everybody is clear. When we go to the next point is cause. When I talk about cause, while talking about cause, there is a capacity, there is a possibility, and then there is a tendency. मैं एक वर्ड cause को dissect कर रहा हूं. What all will form a part of cause? Let's take an example. There is dynamite, there is gunpowder, there is RDX. RDX has a capacity to explode, but it is possible only if there are certain conditions. So if in certain conditions RDX is put, then there is a tendency to explode. So when I say RDX का cause कब बनेगा एक्सप्लोड होने का, या डायनामाइट कब फटेगा, उसकी कैपेसिटी तो है पर वो छुपी हुई है। अगर कोई कंडीशंस होती हैं वो पॉसिबिलिटी बन जाती है, दोनों मिलके टेंडेंसी बना देते हैं और वो फिर कॉज बन जाता है। क्लियर हो गया? इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस वेरी डीप थिंग्स ऑफ कॉज? सो प्लीज रिमेंबर, a thing may have a capacity, but it will become a possibility only under certain conditions. And in the final theory of causation, whenever there is capacity and possibility, then it has a tendency, which we can finally say cause. सबको समझ आ गया आज का? अंजलि, एक गन पाउडर पड़ा रहे, अपने आप थोड़ा ना फटेगा, पर आप उसको बॉम्ब बना के उसको फोड़ो तो फटेगा। ओके, अगला वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कब अपॉर्चुनिटी बनती है? अगर टाइम एंड प्लेस हो। अपॉर्चुनिटी कब बनती है? आप किसी को रॉब करना चाहते हो तो टाइम एंड प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बड़े बाजार में हो तो आप किसी की रॉबरी कर सकते हो, 100 बार सोचोगे। दिन है और उसमें सारे लोग हैं तो क्या आप करोगे? अकेली रात है, अकेली सुनसान सड़क है, तो सुनसान सड़क है और आधी रात है, तो रॉबरी आसान हो जाएगी ना, अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ना। सो याद रखना, अपॉर्चुनिटी के 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, time and place. I hope everybody is clear on these points. इसीलिए जब हम लास्ट सीन थ्योरी की बात करते हैं तो लास्ट सीन थ्योरी किस पे बेस्ड है? अपॉर्चुनिटी पे। तुम आखिरी देखे गए थे मर्डर से 10 मिनट पहले, you had an opportunity to kill him. So अपॉर्चुनिटी हमेशा टाइम एंड प्लेस से जुड़ी होती है। चलिए विल स्टॉप हियर, यहीं से शुरू करेंगे कल। टुमारो वी हैव अ क्लास। फाइन, प्लीज टेक इट अप फ्रॉम हियर ओनली। थैंक यू ऑल। थैंक यू Anshul. So we meet after 25 minutes to continue with the Hindu look. Yes, no.